السلام علیکم کلاس. آج کے ٹاپک میں جو ہے وہ ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھیں گے سائیکالوجی کا. ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں جو گریک فلاسفرز کا کنٹریبیوشن ہے وہ ہم اپنے پریویس لیکچر میں کور کر چکے ہیں. تو اس لیکچر میں ہم جو مسلم فلاسفرز ہیں ان کی کنٹریبیوشن کو دیکھیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ ماڈرن ورلڈ از ناٹ ویری فیملیئر آف دی کنٹریبیوشن آف مسلم فلاسفرز بٹ اٹ واز دی مسلم فلاسفرز who lead to the foundation of scientific psychology and study the human behavior and human psyche in a scientific manner. مسلم فلاسفرز نے جو ہے وہ ماڈرن سائیکو تھراپی اور ماڈرن سائیکو فزیولوجی کی جو ہے وہ بنیاد رکھی اور انہوں نے ڈسکریج کیا ان غیر انسانی طریقوں کو جو مینٹلی پیشنٹس کو ٹریٹ کرنے کے لیے یوز کیے جاتے تھے. جیسا کہ ہم نے گریک فلاسفی میں ٹریفینیشن کا یا ٹریفنگ کا کنسیپٹ دیکھا تھا کہ کس طرح سے وہ غیر انسانی طریقے سے جو ہے وہ مینٹلی ایل پیشنٹس کو ٹریٹ کیا جاتا تھا. اور جو ایک کامن چیز ہے سب مسلم فلاسفرز میں وہ ہے ریلیجن. سب مسلم فلاسفرز نے ریلیجن کو سینٹرل رول دیا ہے اپنی فلسفی میں اور انہوں نے جو ہے سائیکو تھراپی کی جو ہے اور مینٹل ہیلتھ کی جو ہے وہ بات کی ہے کہ ڈسکریج کرتے ہوئے ڈیفینیشن کو اور دوسرے میتھڈس کو جو غیر انسانی طریقے سے جو ہے وہ ہیومن بینگس کو ڈیل کرتے تھے, جو مینٹلی ایل پیشنٹس کو ڈیل کرتے تھے. سب سے پہلا جو مینٹل ہاسپٹل اسٹیبلش کیا وہ بھی مسلم فلاسفرز نے ہی کیا اسپین میں, جو ابھی بھی وہاں پہ کام کر رہا ہے. اور مسلم فلاسفرز کا کہنا تھا کہ انسان جو ہے وہ اچھا یا برا پیدا نہیں ہوتا بلکہ وہ ایز اے ہیومن بینگ پیدا ہوتا ہے اور جو اچھائی یا برائی ہے وہ اپنے وہ انوائرمنٹ سے سیکھتا ہے. اور یہی ماڈرن کنسیپٹ بھی ہے, ماڈرن تھیوری بھی ہے, ماڈرن فلسفی بھی یہی ہے کہ انسان کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے یا جو جس طرح کے وہ کلچر میں جو ہے وہ رہ رہا ہوتا ہے وہی اس کو اچھا یا برا بناتا ہے. اب ہم کچھ فلاسفرز کا کنٹریبیوشن دیکھ لیتے ہیں. ویسے تو بہت سارے فلاسفرز ہیں لیکن ڈیو ٹو دی شارٹ ٹائم لمٹ ہم جو ہے وہ جو مین مسلم فلاسفرز ہیں ان کے کام کو ہی ڈسکس کریں گے. سب سے پہلا ہے امام رازی. امام رازی کا کہنا ہے, امام رازی کا کنسیپٹ تھا کہ a person maintains sentimental attachment with the physical object and when he has to part away from the object he becomes frustrated and a mental patient due to the sentimental attachment with the mortal things. امام رازی نے انسان کی مادی چیزوں سے محبت کی بات کی ہے. اور نیکسٹ ہے الفارابی. According to him, man is composed of two elements, body and soul. Believed in dualistic nature of man, he was of the view that there exists no relationship between body and soul. الفارابی نے ڈیولیزم کی بات کی کہ مائنڈ اور جو ہے باڈی دو الگ الگ سبسٹانسز سے مل کے بنے ہیں جو انڈیویجولی اپنا رول جو ہے وہ پرفارم کر رہی ہیں. نیکسٹ ہے ابن مسکاویہ.
ابن مسکابیہ نے 30 بکس لکھی اور انہوں نے بھی جو ہے وہ کمپوزٹ اپروچ کی بات کی کہ نہ کہ ڈیولیزم کی، کہ باڈی اور مائنڈ جو ہے وہ ایک کمپاؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، اور رول جو سول ہے اس میں وہ امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہوتی ہے. اگر جو ہے وہ سول جو ہے وہ باڈی کو کنٹرول کر رہی ہوگی تو مینٹلی ہیلدی ہوگا پرسن، اور اگر جو ہے وہ باڈی سول کو جو ہے وہ کنٹرول کر رہی ہوگی یا اس پہ رول کر رہی ہوگی تو جو ہے پرسن جو ہے وہ انہیلتھی ہوگا. اس کے بعد ہے ابن سینا. Ibn Sina, a physician, scientist, and a philosopher, considered as the great physician of modern age, give importance to the sentiments of the individual. He said, when man is away from God's love, he is always away from man's love. He gave the systematic account of kinds of mind and its faculties. According to him, there are three kinds of mind: vegetable mind, animal mind, and human mind. human mind. Next है Imam Ghazali. Believe that self, which is called color, is the essence of man. It is the spiritual entity residing in the human body which controls the organic and physical functions of an individual. Self is the center of personality from which all the psychological phenomena originate. According to him, there are six powers of self: anger, impulse, apprehension, intellect, appetite, will. According to him, anger is the bestly power, and intellect is the defined power. His method of treatment is called contradictory treatment. Like illiteracy is treated with literacy. Um, According to Imam Ghazali, um, किसी भी शय का इलाज उसके ऑपोजिट को इस्तेमाल करते हुए किया जा सकता है. जैसे इलिटरेसी को लिटरेसी से ट्रीट किया जा सकता है. उन्होंने थेरेपिस्ट को शेख और पेशेंट को मुरीद का नाम दिया. नेक्स्ट है इब्ने इब्ने अरबी. इब्ने अरबी believed in the idea of Wahdatul Wujud, which means that man is a part of God himself. उन्होंने वहादतुल वजूद का जो था वो आइडिया दिया कि जो इंसान है वो खुदा ही का एक हिस्सा है. और he believed that man is created by God, so for mental health it is essential that he should preach himself in the Zat of God. नेक्स्ट है मजदद अली मजदद अली मजदद अली Thani, a person who is complete in his self and a follower of Shariat and Tariqat is mentally healthy. नेक्स्ट है शाह वलीउल्लाह. He mentioned about two forces, Bisli force, Rabbani force. Both are contradictory forces and are always struggling. When there is no struggle between these forces, then the individual's condition is mentally healthy and well balanced. But
when they are struggling and have conflict, mentally then it is tendency towards mental illness. उन्होंने दो फोर्सेस की बात की, बिस्ली फोर्स और रब्बानी फोर्स की, और उन्होंने कहा कि इन दोनों फोर्सेस के दरमियान जो है वो मुसलसल जो है वो फाइट होती रहती है, ठीक है, और जब जो है इनके दिमाग में स्ट्रगल नहीं हो रही होती तो पर्सन जो है वो हेल्थी होता है मेंटली, और उसकी मेंटल स्टेट जो है वो बैलेंस्ड होती है। लेकिन जब ऐसा नहीं हो रहा होता तो उन फोर्सेस में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो पर्सन जो है वो मेंटल इलनेस की तरफ मूव करता है। After the contribution of Muslim philosophers, change was occur in West and new philosophers were appear. But most of over the change occur after the 17 uh, uh, but most over the change occur after 17th century. um, 17th सेंचुरी में जो है वो रैपिड डेवलपमेंट जो थी वो देखने में आई। The 17th century was a century in which modern concepts and development were taken and displaced the old concepts of Aristotle and Plato. Uh, 17th सेंचुरी में जो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं वह है रानी डिकार्टिस का। Human, according to him, human body seen as a piece of machinery. उसने डिकार्टिस का कंसेप्ट था कि ह्यूमन बॉडी जो है ना ये एक मशीन की तरह है, और जिसके सारे अगर पार्ट्स ठीक से वर्क कर रहे होंगे तो वो मशीन ठीक से काम करेगी, लेकिन अगर उसका एक भी पार्ट जो है वो अपना रोल ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा तो उससे क्या होगी कि पूरी ही मशीन की या पूरी ह्यूमन बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो अफेक्ट हो रही होगी। उन्होंने माइंड बॉडी इंटरेक्शन का जो है वो कंसेप्ट दिया, ड्यूलिज्म की बात की, और ड्यूलिज्म की बात की कि माइंड जो है वो अपना रोल परफॉर्म कर रहा है एज अ सिंगल सब्सटेंस, और बॉडी जो है वो अपना रोल परफॉर्म कर रही है, ठीक है, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो है वो इंटरेक्शन है, दोनों कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने हाइड्रोलिक जो था मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया कि इंसान की जो नर्व्स हैं वो होलो ट्यूब्स जैसी हैं जो एक सब्सटेंस से जो है वो भरी हुई होती हैं, और जैसे जैसे वो सब्सटेंस मूव करता है वैसे ही इंसान का बिहेवियर जो है वो अफेक्ट होता है, या वैसे ही इंसान का बिहेवियर जो है उम, अ, उसके अकॉर्डिंग जो है वो अकर हो रहा होता है। नेक्स्ट है फ्रांस जोसेफ गिल। फ्रांस जोसेफ गिल जो है अपने फ्रीनोलॉजी के कंसेप्ट की वजह से काफ़ी जो थे वो फेमस थे, और फ्रीनोलॉजी का कंसेप्ट ये है कि जो स्कल है इस पे जो डिफरेंट बम्प्स हैं वो इंसान की पर्सनैलिटी की करेक्टरिस्टिक्स को जो है वो शो कर रहे होते हैं। Phrenology is a pseudoscience which involves the measurement of bumps on the skull to predict
mental traits, it is based on the concept that the brain is the organ of the mind and that certain brain areas have localized specific functions or modules. Now, for his work on phrenology, he postulated the idea that particular psychic functions are represented by particular areas of the brain: intelligence, moral character, and other personality characteristics can be discerned by the shape of and the number of bumps on a person's skull. कि intellectual, moral character, personality characteristics, इन सबको जो है वो स्कल पे जो बम्स की शेप है या उनकी जो तादाद है वो ज़ाहिर कर रही होती है। और उसके बाद नेक्स्ट है जॉन लॉक। Locke first defined the existence of innate ideas, arguing that humans are not equipped at birth with any knowledge. He gave the concept of tabula rasa. People are born in this world with empty minds. Tabula rasa, or a blank state. The ideas and memories are imprinted on our minds as a result of experience. जॉन लॉक ने टेबोला रिजा का कंसेप्ट दिया कि इंसान बच्चा जब इस दुनिया में पैदा होता है तो उसका जो ब्रेन है वो एक फ्लैट तख्ती की तरह होता है। ठीक है, एक फ्लैट स्टेट की एक ब्लैक स्लेट की तरह होता है। ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंसेस के साथ साथ जो है वो एक्सपीरियंसेस उस पर प्रिंट होते जाते हैं। और जॉन लॉक जो था ये एक एम्पिरिसिस्ट था कि एक्सपीरियंस से चीज़ें जो है वो लर्न की जाती हैं, एक्सपेरिमेंट से, एक्सपीरियंस से। In 19th century, great changes occurred in the terms of scientific research and development. Mm,